Dear students, in the previous classes, in the lesson number 2, relations and functions, already we were discussing the concept of the function, then types of the function. Under the types of the function, we have to completed the first one, identity function, second the constant function, third we have to discussing with the polynomial function, and the fourth we have to discussing today, this one is rational function. तो हमें यहाँ रैशनल फंक्शन डिफाइन करना है. बिफोर डिफाइनिंग दिस रैशनल फंक्शन टू सी दिस कंसेप्ट ऑफ द रैशनल नंबर. तो ऑलरेडी हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा है. तो रैशनल नंबर ऑलवेज कैन बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो रैशनल नंबर हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जाता है? p by q, where p and q both are the integers. Again, this integer both are the positive and the negative numbers, but q not equal to 0. Such types of standard form we have to say the rational number. If I have to define this rational function, in this rational function, again we have to define here this f is the function from R to R. The set of real number to real number. R again this indicate this set of the domain, either we have to this domain. How to find out the domain, we have to discuss with particular example. If I have to defining this rational function, the rational function can be taken here this one f of x equal to this f p of x डिवाइडिंग बाय q ऑफ x ले लेते हम लोग. तो रैशनल फंक्शन किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे लोग? f ऑफ x, दिस वन फंक्शंस ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x डिवाइडिंग बाय q ऑफ x. अगेन दिस p ऑफ x एंड q ऑफ x बोथ आर p ऑफ x एंड q ऑफ x बोथ आर पॉलिनोमियल्स. ये दोनों क्या हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं. अगेन कंडीशन दिस q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0. q ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. q of x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो your this function is not defined here. Therefore, this f of x equal to p of x dividing by q of x is the standard form of the rational function. In that particular, we have to say p of x and q of x both are the polynomial. We have to say this polynomial function. That means it is the linear, quadratic, then cubic, then bioquadratic. General case, we have to say this polynomial equations. Therefore, this rational function, so to say it in the form of this p of x dividing by q of x. If I have taken this example, first example, this f of x that indicate this functions of x equal to this 2x dividing by this x plus 1. इस टाइप का हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया. तो f of x को 2x dividing by x plus 1, तो ये दिस वन p of x 2x होगा आपका, और q of x क्या हमारे पास x plus 1. तो such types of functions we have to see this rational function. If I have to find out the domain, that means input of that particular function, therefore those points where the denominator not equal to 0, that means we have to say here this f of x, that is can be again writing here, this f of x can be writing here this y equal to, have to define this function y equal to this fx. Y is the functions of x. This f of x को replace किया किससे हमने y से. So 2x dividing by x plus 1. If I have to find out this value of this y, that means we have to say denominator not equal to 0. Therefore, those points we have to consider here. So x plus 1 not equal to 0. तो denominator का आंसर 0 नहीं होना चाहिए. Therefore, we have to say here x plus 1. तो this plus 1 transfer this right hand side, तो x not equal to minus 1. Suppose हमने x की वैल्यू यहाँ negative of 1 पुट करते हम लोग, तो negative 1 plus of the positive 1, that means answer should be 0, or you this function should be not defined. Therefore, if I have to find out the domain of that particular function except those points where denominator becomes 0, तो यहाँ x की वैल्यू negative of 1 पुट करने के बाद में आपका आंसर क्या होगा? not defined होगा. Therefore, this x belongs to set of all the real numbers. This minus sign indicates this except of this minus 1. तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा set of all the real numbers, set of all the real numbers but except of minus 1. क्योंकि आप minus 1 पुट करेंगे हम लोग, तो minus 1 plus 1 क्या होगा? आपका आंसर 0 मिलेगा. Therefore, ये जो फंक्शन हमने लिया है y equal to x upon x plus 1, its domain is the set of all the real number. Domains means what is this input, but except of those points what is this minus of 1 or the negative of 1. क्योंकि negative 1 पुट करने के बाद में आपका आंसर क्या होगा? 0 मिलेगा, और डिनोमिनेटर का आंसर 0 आता है तो फंक्शन क्या होगा? आपका नॉट डिफाइन होगा. Again, or taking this second example,
this f of x equal to हम लोग 2x plus 3 कंसीडर किया डिवाइडिंग बाय this x square plus of the this 4x plus 5 as I have taken here 5x plus 4. The second example I have taken here this f of x to 2x plus 3 dividing by x square plus of the 5x plus 4. If I have to find out here the domain of that particular function f of x, that is what is this y equal to, because you have to define this function y equal to fx, so y equal to 2x plus 3 dividing by x square plus of the 5x plus of this 4. तो जब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x square plus 5x, what writing here x square plus of the 5x plus 4 equal to 0. If I have to find out the domain as the input, तो x square plus 5x plus 4 not equal to 0 here, ये 0 नहीं होना चाहिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें, तो therefore what to say here x square. If I have to find out these factors of that quadratic equation, if I have to find out these factors of 4, its multiplication should be 4 and addition the middle terms that can be writing in this one 4 and 1. So 4 multiply 1 का आंसर 4 मिल जाएगा आपको, और 4 plus 1 कितना होगा 5. So that can be writing here this one 4x plus of this x plus 4 not equal to 0. ठीक है ना, तो 4x plus x क्या होगा आपका 5x होगा. The starting two terms what taken this x should be common, यहाँ से x common ले लेंगे हम लोग, तो x plus 4 one of the factors. Then again from both the terms what taken this one common, so x plus 4 again this another factor not equal to 0. Therefore this x plus 4 this is common factors plus into remaining factor this x plus 1 equal to 0. Therefore what is this x not equal to 0 again, x plus 4 not equal to 0 and this x plus 1 not equal to 0. Therefore this x not equal to minus of 4, फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको not equal to minus 4, and second कंडीशन x not equal to minus of 1. सपोज इस एग्जांपल में हम लोग ये 2x plus 3 dividing by x square plus 5x plus 4 में हम लोग x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 पुट करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ नेगेटिव ऑफ 1, तो ये नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या हुआ पॉजिटिव 1 होगा, तो 1 आंसर. ये 1 plus 4 5 again this x equal to minus 1, so minus 1 multiply 5 again the plus minus 5, so minus 5 plus 5 that is 0. Therefore that function should be not defined. तो यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करने के बाद में भी ये फंक्शन क्या होगा आपका डिफाइन नहीं होगा. Similarly if I want to substitute this x equal to -4, तो -4 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें +16. यहाँ x की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया -4, तो ये -4 multiply 5 का आंसर क्या होगा -20, ये +16 और ये +4 क्या होगा आंसर 20, और 20 माइनस ऑफ 20 क्या होगा 0 होगा. मतलब दैट मींस व्हाट इज द डिनोमिनेटर, तो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू -1 रखने पे और x की वैल्यू -4 रखने पे ये आंसर क्या होगा 0 होगा. Therefore to say here x belongs to set of all the real number except this minus indicate this except of the points this -1 and this minus of 4. तो ये जो फंक्शन है हमारे पास fx equal to 2x plus 3 dividing by x square plus 5x plus 4, इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ द पॉइंट्स x equal to -1 और x equal to -4, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करने पे और x की वैल्यू -4 पुट करने पे कहीं ना कहीं ये डिनोमिनेटर का आंसर क्या होगा 0 होगा. Therefore we have to say the domain of that particular function is the set of all the real number except of the -1 and minus of